Okay, very good morning to all of you. Good morning. What's your good name, dear? Vashu. One of the D2D students. Good. Welcome. दिव्यजीत कहाँ है? हर्षवर्धन, दिव्यजीत, वो दोनों तो आ रहे थे ना? वो तो हॉस्टल में है या नहीं? ठीक है. Harshvardhan, are you there in the meeting? Harshvardhan. Yes, sir. Actually, थोड़ा स्कूल जैसा लग रहा था. हेलो. हाँ हाँ बोल बोल बोल. हेलो. हाँ बता. सर वो आज क्या मेरे को थोड़ा जुकाम वगैरह जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा बेकार में आके रिस्क ना लूं. ध्यान रखना है थोड़ा. इसलिए मैं सर हॉस्टल में ही अटेंड कर रहा हूँ अभी. ठीक. Good. Let me continue with our content. Yesterday we were discussing about cut set and Yes, edge sir. connectivity and vertex connectivity of the graph. Now let's begin with the separable graph, and we can say that a graph is a separable graph. If the vertex connectivity of a graph is 1, then we'll be labeling that particular graph as a separable graph. Let me give you the definition. A connected graph is said to be separable. A connected graph is said to be separable if its vertex connectivity is 1. Now, first of all, it will be good if one of you will explain what we mean by vertex connectivity. Yes, Rishabh, can you? Rishabh, can you explain a vertex connectivity of the graph? Sir, number of vertices required to remove to make the graph disconnected. Correct, absolutely perfect. A number of vertices which we need to remove to convert that particular graph into disconnected graph. Is it? कोई ग्राफ जो कि कनेक्टेड है उसको डिस्कनेक्ट बनाने के लिए कम से कम जितनी वर्टेक्स रिमूव करनी पड़ रही है ना, that particular number is known as the vertex connectivity of the graph. Similarly, we may define the edge connectivity, the number of edges we need to remove from the graph to convert that graph into disconnected graph. That number is, yes, minimum number. Yes, that number, we may say that number is edge connectivity as well as vertex connectivity in the case of vertices, is it? So if the vertex connectivity of any of the graph is 1, then that particular graph is known as a separable graph. In a separable graph, a vertex whose removal disconnects the graph is known as a cut vertex. उसको हम क्या नाम देंगे? Cut vertex. Cut vertex ऐसे एक वर्टेक्स जिसको एक को निकाल दो, ग्राफ कट हो जाएगा मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा. Is it? Good. In tree, if we talk about tree, let me connect my pad. If we talk about a tree, and we all know that tree is actually a connected graph, उसमें tree की कल ही हमने बात की थी. What is the vertex connectivity of a tree? Vertex connectivity of tree is always 1. कोई भी ट्री ले लीजिए, उसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है भाई? 1 है. कोई यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द वर्टाइसेस के जिसको निकाल देने से वो ग्राफ जो पूरा है ना, वो ट्री जो पूरा है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है. सो इन अ ट्री एवरी वर्टेक्स विद डिग्री ग्रेटर देन 1 इज नोन एज कट वर्टेक्स. एवरी वर्टेक्स हुज डिग्री इज ग्रेटर देन 1, एक डिग्री वाली वर्टेक्स को नहीं, अगर उसको निकालेंगे तो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा. क्या बोलना चाह रहा हूं? लेट मी पिक माय पेन एंड लेट मी हेल्प यू फॉर दैट. सपोज आई एम डीलिंग विद वन ऑफ द ट्री लाइक दिस. मान लीजिए ये एक ट्री है. ओके, लेट मी गिव द लेबलिंग टू द वर्टाइसेस A, B, C, D, E and F. Suppose these are the 6 vertices this particular tree T is having. Now, identify the vertex कि जिसको हम कट वर्टेक्स बोल सकते. कट वर्टेक्स माने कि removal of that vertex must disconnect this particular graph, this particular tree. अगर मैं क्या B को निकाल दूं, तो क्या ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा? अगर B को निकालूंगा ना तो सिचुएशन ऐसी होगी. देखिए, the graph will look like this, yet ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ नहीं है. Is it? कोई बोल रहा है कि A को निकाल दो. इस केस में यहां से A को निकालूंगा अभी के लिए. यस, अगर B को रखते हुए. Now, if this is a tree, now if I'm removing A, then graph is look like it has 2 different components. Is it?
हाँ पर what is the message? Just go through this. In tree, every vertex with degree greater than 1, एक से ज्यादा डिग्री वाली कोई भी वर्टेक्स जो है ना, उसको निकालने से वो ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा ही होगा। मान ले कि ग्राफ ये वाला है जो हम बात कर रहे थे, अब इसमें से एक बी है, एक डी और एफ, ये तीन वर्टेक्स ऐसी है जिसकी डिग्री 1 है। इन तीनों को, तीन में से किसी एक को निकाल, ये ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा। बट ऑब्जर्व कर, ए की डिग्री 2 है, एक से ज्यादा, डिग्री ऑफ सी इज 3 which is greater than 1. Similarly, degree of E is 2, which is greater than 1. अब A को निकाल तो भी ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा, C को निकालने से भी ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा, और E को निकालने से भी ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा. Is it? So hopefully you are able to understand this particular point. In a tree, every vertex with degree greater than 1 is always going to act as a cut vertex. Seprable graph मानी कैसा ग्राफ जिसमें एज कनेक्टिविटी 1 है, सॉरी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है. ठीक है, चलिए लेट मी इरेज दिस फ्रॉम दिस स्लाइड एंड लेट मी प्रेजेंट दिस. कैन यू आइडेंटिफाई वन ऑफ द कट वर्टेक्स फ्रॉम दिस ग्राफ? कैन यू आइडेंटिफाई वन ऑफ द कट वर्टेक्स फ्रॉम दिस ग्राफ? एक ही वर्टेक्स है जिसको मैंने लेबल किया हुआ है, दैट इज बी. थोड़ा सोचिए, अगर मैं यहां से b को निकाल रहा हूं, if we are going to remove the b from this particular graph, then the graph will look like this. In that case, your graph will look like this. b को निकाल रहा हूं, मानिए कि ये निकल जाएगा. And we guys are good. जब हम कोई वर्टेक्स को रिमूव कर रहे हैं ग्राफ में से, तो उस वर्टेक्स के साथ जितनी भी एजेस इंसिडेंट है, वो सारी एजेस खुद ब खुद निकल जाएगी. ठीक है, पर अगर हम एज को निकाल रहे हैं तो उसके साथ एसोसिएट उसके जो टर्मिनल वर्टेक्सेस है वो नहीं निकलेंगे, ये बात याद रखनी. सो यहां से अगर बी निकाल रहे हैं तो बी की डिग्री देखिए 1 2 3 4 5, वो पांचों एजेस खुद ब खुद निकल जाएगी. एंड ग्राफ विल लुक लाइक दिस. And now one can clearly observe this graph is disconnected graph because this graph is having two different components. Is it? So in this particular example, B is known as a cut vertex. B is known as a cut vertex. इस ग्राफ के लिए B जो है वो cut vertex है, और cut vertex separable ग्राफ में होती है. ठीक है, so पूछ सकता हूं मैं एग्जाम में, it might be the case, define cut vertex with one of the example. हो सकता है ऐसा, तो आपको ये वाली बात रिप्रेजेंट करनी है. नाउ आई एम गिविंग यू दैट लिबर्टी इफ आई एम आस्किंग एनी ऑफ द डेफिनेशन इन द एग्जाम. तो ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड वो डेफिनेशन याद रखनी है. जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई हैड मेंशन दैट अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट्स वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज 1. डेफिनेशन अब तक हम जब 12th या 10th तक बात कर रहे थे तो क्या हमारे दिमाग में एक रहता था कि भाई डेफिनेशन अगर है तो वर्ड टू वर्ड लिखनी है. इज इट? वहां पे वर्ड टू वर्ड आपको लिखना, ऐसा नहीं है. इज इट? यू मे यूज योर ओन वर्डिंग, पर ध्यान में ये रखना है कि मैसेज मस्ट बी क्लियर. वही बात होनी चाहिए, उसका मीनिंग वही होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं, जो कि एक्चुअल डेफिनेशन में है. ठीक है, सो यू मे यूज योर ओन वर्डिंग्स, इट्स फाइन, इट विल बी टोटली फाइन. In this graph, cut vertex is B, and this is a separable graph. Okay. What is the best way of connecting? What is best way of connecting? Let me show you something, and then in this graph, in this both graph, we have 8 vertices and 16 edges. This graph, here it is. In both these graphs, we are having 8 vertices and 16 edges. काउंट बाद में कर लेना, पर इन दोनों में 8 वर्टेक्स है और 16 एजेस है. फर्स्ट ग्राफ हैज 1 वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड 3 एज कनेक्टिविटी. अगर आप पहला ग्राफ देखें तो उसकी एज कनेक्टिविटी आइडेंटिफाई कीजिए कितनी होगी. आपको एक फर्स्ट वाले ग्राफ, मानी कि लेट मी पिक माय पेन फ्रॉम द स्क्रीन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट, so kindly focus on this. Let's stick with this particular graph. Does it identify the vertex connectivity? As we all know that इसी ग्राफ के साथ हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले in the previous slide. Vertex B is a cut vertex. That means कि B को निकालने से ये ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा, तो इसकी
वर्टेक्स कनेक्टिविटी एक है. Now what about its edge connectivity? इस ग्राफ में अगर इन तीनों एज को निकाल दूं, देखिए, then this graph will be disconnected graph. तो इसकी एज कनेक्टिविटी 3 है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है. किसकी बात हो रही है? ऊपर वाले ग्राफ की. अब नीचे एक वाला ग्राफ देखिए, इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है बताइए, एंड एज कनेक्टिविटी. I'm giving you time, just go through it. Try to identify vertex connectivity as well as edge connectivity of this graph. देख ले, एक बार सोच ले, vertex और edge connectivity दोनों देख ले. All those who are attending this online are supposed to drop message, drop your answer on the chat box. I'm looking for the vertex connectivity and edge connectivity of the below graph. That means this one. I'm looking for this one. Okay, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ. What will be the vertex connectivity and edge connectivity of this graph? Rohan, तू बता. Jaideep Madhani, you are saying 4, but for which? For which question? Vertex connectivity बता रहा है या बेटा edge connectivity बता रहा है? Jaideep, both. Jaideep is saying vertex connectivity is also 4 and edge connectivity is also 4. This is the answer from Jaideep. How many of you agree with Jaideep? Haldeep, are you there? Attending this session or not? Haldeep. Haldeep, are you there? Haldeep is not there. Okay, Girish, are you there? Girish. Girish Purohit. Girish. Am I audible to you, Pranjul? Am I audible to you, Meghna? Am I audible? Hello? Let me know. Yes, sir. You're audible. हाँ तो कौन, क्यों भाई कोई बात नहीं कर रहा है? इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफ की. We are good. एज कनेक्टिविटी क्या है? We are good. What is vertex connectivity? Jaideep is saying that vertex connectivity is 4, edge connectivity is 4. How many of you agree with them? Agree with him? Preet, unmute kar beta. Preet, unmute yourself. Preet is not there. Pema. Pema. पेमा, लगता है आज बात नहीं करनी है किसी को. ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ. Yes sir, yes sir. Pema, can you tell me what will be the vertex connectivity of this graph? 1, 2. Right sir. Sorry? Second one or first one sir? Pardon? I mean first one or second one sir? I mean graph sir. Second one, this particular. Okay sir, let me count it sir. 4 sir, 4. Vertex connectivity will be 4, is it? Yes sir. Oh. Chalo, mari saame છે એમાંથી. What will be the case if we are going to remove A as well as C? What will be the case if we are going to remove A as well as C? This graph will be disconnected, is it? Surely. If we are going to remove A and C, this graph will be disconnected, yes or no? नहीं होगा ना? Is it? So we need to remove at least 4 vertices. Yes. It can be easily seen that the edge connectivity as same as the vertex connectivity of this graph is 4. Jaideep was correct.
Wait, I'm getting one of the question from the offline student. Yes, please. ऐसा हमने there was a question which I had thrown towards you. You need to verify whether it is true or not for each and every case. Yeah. There is an example of this particular graph where the vertex connectivity and edge connectivity both are different. Vertex connectivity is 1, edge connectivity is 3. Is it? So it is not always the case that in each and every graph the vertex connectivity and edge connectivity will be same. It is not the case, is it? Okay. वो अगर आपने प्रेजेंटेशन थोड़ा आगे बढ़ाया होगा तो भी पता चल जाता, काफी सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाते, इसी में से आपको पता चल जाता कि ये दोनों सेम होगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. बट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, the graph which is here, where is my pen? Yes, here it is. This is the graph. Right, the vertex connectivity is also 4, edge connectivity is also 4. Now just go through this particular. Even after any 3 stations are born, then any 3 line destroyed, the remaining station can be still continue to communicate with each other. अब ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है? Just go through that. Just go through that. Yes, please. Consider that all the vertices as a station, consider the edges as a connection, and think that suppose we are going to destroy some of the stations, one of the station out of that, and still we are able to communicate. What will be the case for the communication for the rest of the stations? Consider Sir, this वो graph connected रहना चाहिए. Sorry, Rishabh, wait. I'm dealing with the all the students, those who are in front of me. First of all, yes, please. कोई भी 3 उड़ा दे यहां से, ये 3 उड़ा दे, ये 3 उड़ा दे, A, F and D. Still that graph will be. यस, तो कुछ एक टॉपिक है जो यहां से लेके जाऊंगा मैं आपको. वेट, दिस द सेकंड ग्राफ इज बेटर कनेक्टेड देन द फर्स्ट ग्राफ. इज इट? सेकंड ग्राफ इज बेटर कनेक्टेड देन द फर्स्ट ग्राफ. नाउ ऑब्जर्व द हेडर. ऑब्जर्व द हेडर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड. व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग? बोल सकते हैं किसी भी ग्राफ के लिए अगर वर्टेक्स कनेक्टिविटी ज्यादा है, if the vertex connectivity of one of the graph is greater, then we may say that that graph is betterly connected. वहां पे हमने if we are going to consider that particular vertices as a station and rest of the edges as a vertex को हम station consider करें, edges को हम connection consider करें, then ऐसा कोई ग्राफ कि जिसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी बड़ी है ना, बड़ी, that is a greater number, then we may conclude that that graph is betterly connected. That graph is betterly connected. आप देखिए यहाँ पे वर्टेक्स कनेक्टिविटी एक ही है. अब आप इस एक को निकाल दीजिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो जाएगा. पर यहाँ पे कम्युनिकेशन, हाँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग 1 वर्टेक्स, इवन मैं 3 वर्टेक्स तक भी निकाल रहा हूं तो भी ये ग्राफ कनेक्टेड है. नाउ थिंक, इसी कंसेप्ट को आप थोड़ा सोचिए अपने फील्ड में, इन योर ऑन फील्ड. कंसिडर दैट ऑल वर्टाइसेस एज अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप या तो फिर डेस्कटॉप, कुछ भी मान लीजिए, एंड दैट वर्टाइसेस आर द लैंड केबल्स मान लीजिए. इज इट? तो कौन सा वाला ग्राफ ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्टेड है? नीचे वाला, इज इट ना? जिसकी अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसकी एज कनेक्टिविटी, ऊपर वाले ग्राफ की एज कनेक्टिविटी 1 है, जबकि इसकी एज कनेक्टिविटी क्या है? 4. इज इट? द एज कनेक्टिविटी ऑफ दिस इज 4.
Okay, wait, guys. I'm. Mark, this is out as Nikunsu. Okay, okay. Wait. We'll be discussing on the connectivity once again, but the next faculty might be Nikunsu is having session. He's here. So let me stop the recording. आज बहुत कम टाइम मिला वरना ये वाला बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर we will continue with this in the next session. So let me stop the recording. 57 is the